وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. This is Mohammed Noman. Like hundreds of thousands of other Pakistani children, he's a student of Hafiz, the memorization of the Quran by rote in Arabic, a language he doesn't understand. ये पढ़ के हम सबको पढ़ाएंगे, फ़ायदा सवाब मिलता है और या आखिरी कुरान की तालीम देंगे और आखिरी ज़िंदगी में भी ये काम आएगी. In the Western world, madrassas have become synonymous with Islamic extremism. Images like these of young students rocking back and forth as they recite the Quran have become a common backdrop to accusations that madrassas brainwash kids and prime them for militancy and terrorism. This distrust of madrassas is shared by many less religious Pakistanis, like Pervez Hudboy of Qaeda-e-Azam University in Islamabad. And these are students who are not taught to think, who are not taught to question, but they're taught to obey. That obedience now, in an age where the mullah has become violent, where he is on the war path, where he calls for jihad, is now a prescription for tearing society apart. But for many Pakistanis, the religious education provided by madrasas is seen as essential to becoming a good Muslim and a good citizen. देखिए, बाहर ममालिक में जो मदरसे की एक सोच अब इस वक्त बन गई है तो वो एक बहुत ख़राब सोच है. मदरसे के इस लेवल पे हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो ये कि हम नई जनरेशन को खुद इखलाकियात की तालीम दें और उन्हें मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाना मकसूद है. Jamia Tanzur Ulum Hamidiya, on the outskirts of Karachi, is a typical madrasa. It houses, feeds, and educates about 30 children from poor rural areas of southern Pakistan. The school is funded through zakat, the charitable donations required of all Muslims. हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल गरीब आदमी देहात की हैं बराड़ की वसल स्कूल भी नहीं है स्कूल प्राइवेट है उसमें फ़ीस है फ़ीस नहीं दे सकते गरीब आदमी इस वजह से ये पढ़ा रहा है तालीम अच्छी है फ़ीस से बिला मुफ्त है अल्लाह का खौफ भी है दुनिया आखिरत की अच्छाई भलाई भी है उस वजह से ये पढ़ा रहे हैं. Abdul Hani, whose father drives a donkey cart, has come here from a small town in the interior. He believes he'll get a better education here than at the dysfunctional government school in his home village, where facilities are limited and teachers often don't even show up to instruct their classes. बस होता गुर्बत है पैसे की कमी है ऐसे इस वजह से दीन का अच्छा है इधर भी काम आएगा उधर भी काम आएगा दीन की कच्ची इंशाल्लाह कोई और आलमी कोर्स है कोई और दीन का काम करना है ज़िंदगी में दीन का इल्म पिराना है. ये तालीम ऐसी है तो खुदा वैसे ही भेज देता है. अल्लाह ताला आलिम बनेगा किसी इमाम होगा मदरसा खोलेगा अल्लाह ताला उसको खुद ही देगा. But madrasa critics are far less optimistic about the quality of education these schools are actually offering and the employment prospects for the graduates they produce. There is very little of modern content in the madrasa education, and so when students are, when they graduate from these madrasas, they don't have skills that can be used in the rest of society apart from teaching kids the Quran, apart from becoming the custodians of mosques and people who can give the call to prayers, muezzins and so forth. Reconciling the worldly shortcomings of a madrasa education with a widespread belief in the spiritual value of religious instruction is not an easy task. And this problem speaks to a larger divide between Islam and secularism running through Pakistani society. The answer may lie with students like Nasir Abbas, who attends both a madrasa and a secular school run by a non-profit in the Karachi slum where he lives. इस्लाम के बारे में बताते हैं कि हमें ये कैसा नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए हमारे पैगम्बरों के बारे में सबके बारे में और मदरसे में बताते हैं और स्कूल में हम आते हैं यहाँ पे हम दुनिया के बारे में जानते हैं और कुछ हम आगे चल के कुछ बनने के बारे में जानते हैं हम आगे जाके कुछ बने कैसे और आगे जाके यानी कि अभी जिस तरह मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इसके बारे में सिखाते हैं. But in a country where a third of children never get a chance to go to school at all, few students are so fortunate to have the perspective provided by this combination of religious and secular education.
And while madrassas remain a visible target for anxieties about the miseducation of a new generation of Pakistani children, the real culprit may be a failing public education system that has left millions of students with the bleak choice between a madrasa education and no education at all.